गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज दैट यहाँ पर कोल्डर बॉडी जो है, कोल्डर बॉडी इज आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस और उसका मास दिया हुआ है 660 ग्राम आइस, 600 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। और हॉटर बॉडी है is copper vessel at 350 degrees Celsius. Now the final state is 550 gram ice plus water is the final state. So since ice and water coexist, finally ice और water दोनों एक साथ है, इसका मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर कितना होना ही पड़ेगा? So therefore final temperature is 0 degree Celsius. Clear? Now what is the question? The question is find the mass of the vessel. The specific capacity of copper is given 100 calorie per kg per Kelvin. So you can work in CGS system because everything is gram. So C for copper is equal to 100 calorie per kg per Kelvin, which is equal to 100 calorie per kg per Kelvin. So that can be written as 0.1 calorie per gram. Per degree Celsius. Calorie per gram per degree Celsius. Clear? Dile bolche to konde So now what you need to find out is heat lost by the hotter body and heat gained by the colder body. Now tell me, heat gained by the colder body. तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? पहले समझ लेना है कि ये कोल्डर बॉडी क्या क्या स्टेट से जा रहा है। देखो कोल्डर बॉडी इनिशियली कितना टेम्परेचर में है? -10 डिग्री सेल्सियस आइस। तो इसको फाइनली किसमें कन्वर्ट करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं, पहले यहां से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, फिर यहां से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। समझ रहा है? Since the final temperature is 0 degree Celsius, तो हम लोग को यहीं पर रुकना है। Alright? यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? mc डेल्टा टी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ml यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन ये m कितना मास का लेंगे? देखो फाइनली कितना ग्राम आइस है? स्टार्ट किए थे कितना ग्राम से? तो मतलब कितना ग्राम आइस मेल्ट किया है? 50 gram, right? So we need to take the mass of ice as 50. So this will be mc delta t plus ml. mc delta t में mass of ice is कितना? 50 gram. देखो 600 minus 550 करना पड़ेगा. So that is 50 gram. C specific capacity of ice कितना है मालूम है तुम लोगों को? हाँ 0 नहीं, I said 0.5, right? 0.5 specific capacity of ice. C for ice is 0.5 calorie per gram. Sorry, calorie per gram. So now, per degree Celsius. Per degree Celsius. So into temperature change कितना हो रहा है? देखो -10 से 0. So the temperature change is 0 minus of -10 plus ml is 50 into L is 80 calorie per gram ना? 80 ना? ml क्या है? LL हाँ, लेकिन rate of fusion is 80 हाँ. ml है जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसका स्टेट चेंज होता है, तो m is the mass and L is the latent heat of fusion.
স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। তার কারণটা হচ্ছে যে ও রাইট ইউ আর এখানে 600 হবে, দিস ইজ শি ইজ রাইট। এখানে 600 কেন হবে তার কারণটা হচ্ছে পুরা আইস, হ্যাঁ রাইট যেদিকে সে কারেক্ট বলেছি। কেন 600 হবে তার কারণটা হচ্ছে the whole ice, for the whole ice block the temperature has to come down to 0 degree Celsius, otherwise ice will not start melting, ঠিক আছে? So the whole ice has to come down to 0 degree Celsius, সেজন্য it will be 600 m, এখানে m টা 600 হবে, but this m will be 50. Why? Because only 50 gram has melted, rest of the 50 grams did not melt. So the heat gained by the colder body will be how much? 3000 plus 7000 calories. Okay, and therefore heat lost by water body Excellent. हम बात करते क्या बोले? Mass of the vessel. Okay, right. The heat lost by the water body का क्या लिखा है? Water body is copper vessel. तो इसका mass, let mass be m. Mass be m grams. So it will be heat lost by the water body is equal to m c of water body কত আছে? In CGS system it is 0.1 into delta T is, it was initially at 350 degree Celsius और finally কত টেম্পারেচারে গেছে 0 degree Celsius, so 350 minus 0 রাইট। কোনটা বড়? হ্যাঁ, তো ফাইনালটা 0 মানে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল না, ও ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করলে তুমি টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা পাচ্ছ। এখানে তো শুধু টেম্পারেচার চেঞ্জটা বার করতে হবে, মানে কতটা চেঞ্জ হয়েছে ভ্যালুটা। আর যদি তুমি ওরকম ভাবে বার করো তাহলে হিট লস ইকুয়াল টু হিট গেইন না করে হিট লস প্লাস হিট গেইন ইকুয়াল টু 0 করতে হবে, করে সলভ করতে হবে। accurate? So now from principle of calorimetry, calorimetry heat loss is equal to heat gain. The heat loss equal to 35 m and heat gain is equal to 7000 calories. So obviously m is equal to 7000 by 35, 200 gram. Heat lost by water body is equal to heat gained by the colder body. There is a report. So 5 part 1, question number 5 part 1 says that we have 1 kg of supercooled water. We have 1 kg of supercooled water. So इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि water ice में freeze हो रहा है, तो remaining water मतलब if we take this much amount of water, उसमें some part ice में freeze हो रहा है and the other part is water. So the part freezing to ice, let mass of ice formed be x. So x into 336 into 10 to the power 3 is 1 minus x into 4200 into 0 minus of minus 8. इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ रहा है 1/11. So 1/11 kg of ice will be formed. The second part says that if we want to convert the whole water into ice, उसका सुपरकूल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यहाँ पर पहले सुपरकूल टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो सेकंड केस में अगर पूरा वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो कितना सुपरकूल वाटर का टेम्परेचर रहना चाहिए? सो वी आर डूइंग m into L फॉर आइस, क्योंकि ये पूरा मास ऑफ वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फॉर द वाटर व्हिच इज गिविंग अवे द टेकिंग अप द हीट एनर्जी, so it will be mc delta t. Delta t is 0 minus t. Solving, we get t as -80 degree Celsius. So -80 degree Celsius is should be the temperature of water for it to be converted wholly into ice, pura ice. Okay? Next question number 6. 6 में क्या है?
6 बहुत इजी एक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि an electric heater whose power is 54 watt, you know power is 54 watt, इसका मतलब क्या है? मतलब it can supply 54 joule per second। heat develop পেয়ে যাবো power into time করলে ভলিউম দেওয়া আছে ওটা রো এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে মাস পেয়ে যাবো, মাস into c into t পেয়ে গেলে হিট ইউজ পেয়ে যাবো, তারপরে রেডিয়েটেড হিট ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস q2 বাই q1, q2 টা হচ্ছে হিট ইউজ আর q1 টা হচ্ছে হিট ডেভেলপ। ব্যাস अच्छा, so what we do over here is हाँ 6 का क्या बोला है कि power is 54 watt is immersed 650 in 650 centimeter square water। अच्छा बड़ा square water हो गया 650 centimeter cube water, so 650 centimeter cube मीटर सर ओटा मीटर क्यूब করে নাও। you know 650 centimeter cube water मतलब इसका मास कितना होगा? 650 into 10 to the minus 650 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। हाँ SI यूनिट में 1000 होता है, CGS यूनिट में 1 ग्राम पर cc होता है, तो this will be 0.65 kg। ঠিক আছে ঠিক আছে 0.65 kg of water। ঠিক আছে Now in 3 minutes the water is heated by 3.4 degrees Celsius, so therefore in 3 minutes heat produced by heater कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? देखो उसका पावर दिया हुआ है, पावर के साथ हम लोग टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सो 54 into 3 into 60, this much joules। ऑलराइट, वो कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ एक बार। 54 into 3 into 60 কত হচ্ছে? 54 into 3 into 60 কত হচ্ছে? जल्दी से बताओ सर ওটা হবে না 9720 97 जूल। अच्छा, और heat used absorbed by water, heat absorbed by water, water বদলে heat absorb করে কি করে বার করব? mc delta mc delta t, that is 0.65 into specific capacity of water in SI system is 4200 into delta t is how much? 3.4 it is given, 3.4 it is given, 9282 joules of heat is absorbed। radiated part heat lost তাহলে the heat lost is equal to 438 joules and the fraction of heat lost is 438 divided by 9720, which is 0.045। আচ্ছা ঠিক আছে, সরি। সো এখানে কোশ্চেন নাম্বার 7 বলেছে যে we have some ice which is at -10 degrees Celsius and it is dropped into water, how much water will get frozen because of the ice coming from -10 degrees Celsius to 0 degrees Celsius। Now heat gained by the colder body means मतलब ice, the heat gained by ice will be mc delta t, that is 50 into 0.5 into 0 minus of -10, which is 250 calorie, and the heat lost by hotter body means water which was at 0 degrees Celsius, it will lose the heat and get converted into ice। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? स्टेट चेंज या टेम्परेचर चेंज? स्टेट चेंज। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सो m जो हम लोग को पता नहीं है, we need to find it out, और latent specific latent heat of ice यहाँ पर फॉर्मेशन दिया हुआ है 80 calorie per gram, so it will be m into 80। is that clear? So therefore heat lost, हाँ किलोकैलोरी पर kg है ना, so heat lost equal to heat gain, heat loss equal to heat gain मतलब m into 80 is equal to 250, so that will give you mass of ice formed as 250 by 80। 3.125 m is the mass of ice formed, mass of ice formed, ग्राम हम लोग सीजीएस सिस्टम में किए ना, ये ग्राम होगा।
हो जाएगा इससे 3.125 কেন কত দিলে কত কি লাগবে সবে বলে রেখেছি সিবিএসই তে বলে রেখেছি oh sorry question number 8 और 4 का exactly same repeat होगा अच्छा 9 is a very important question listen this very carefully question number 9 see in most of the sums we do heat loss equal to heat gain as principle of calorimetry so we can also write heat lost minus heat gained is equal to 0 yes or no so in some cases it becomes very difficult for us to identify which one is the hotter body and which one is the colder body in those cases we use this method means heat lost सबके लिए निकालते हैं तो किसी किसी के लिए हीट लॉस्ट होगा किसी के लिए हीट गेन होगा राइट तो उन लोग अपने आप साइंस कंफर्म करके इक्वल टू 0 लिख देने से सॉल्व होकर आंसर आ जाता है ठीक है नहीं जैसे ये वाला सम देखो 9 वाला सम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 says equal volumes of three liquids of densities ρ1 ρ2 and ρ3 at specific heat capacities C1 C2 and C3 at temperatures T1 T2 T3 अब कैसे पता होगा कौन सा हायर टेंपरेचर है कौन सा लोअर टेंपरेचर है बोला हुआ है कुछ तो हॉटर बॉडी कोल्डर बॉडी यहां पता नहीं चलेगा तब हम लोग कैसे करते हैं देखो आर मिक्स टुगेदर व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर सो लेट द फाइनल टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर बी T let the final temperature of mixture be T अब हम लोग पता नहीं है कि T1 T2 और T3 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है राइट सो अगर हम लोग को ये पता नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं हम लोग सबके लिए हीट लॉस ले लेते हैं या सबके लिए हीट गेन ले लेते हैं और फाइनल टेंपरेचर माने फाइनल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इक्वल टू 0 कर देते हैं इसका मतलब क्या है हीट लॉस हीट गेन सबको मिला के 0 है मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ थ्री लिक्विड्स डेंसिटीज ρ1 ρ2 दिया हुआ है मास कैसे निकालते हैं हम लोग मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी राइट सो m1 होगा ρ1v m2 होगा ρ2v और m3 होगा ρ3v so m1 into c1 into t minus t1 plus m2 into c2 into t minus t2 plus m3 into c3 into t minus t3 is equal to 0 मतलब सबके लिए mc डेल्टा t किए हम लोगों को पता नहीं है कौन सा t से बड़ा है कौन सा t से छोटा है सो वो अपने आप में एडजस्ट कर लेगा और हम लोगों को करेक्ट आंसर यहां से मिल जाएगा समझ में आया तो जब तुमको समझ में नहीं आएगा या पता नहीं चलेगा कि कौन सा हायर टेंपरेचर है कौन सा लोअर टेंपरेचर है मतलब ऐसे वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा तब हम लोग हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन नहीं करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं सबका हीट लॉस या सबका हीट गेन इक्वल टू 0 करते हैं समेशन एडिशन सो हम लोग को निकालना क्या है व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर मतलब T निकालना है ना सो m1 की जगह में हम लोग क्या डालेंगे v ρ1 डालेंगे क्योंकि m1 तो दिया हुआ नहीं है सो v ρ1 यहां पर डालेंगे सब जगह में तो v कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा we'll have ρ1 c1 t minus t1 plus ρ2 c2 t minus t2 plus ρ3 c3 t minus t3 is equal to 0 so I'm not writing the steps t का वैल्यू आएगा ρ1 c1 t1 plus ρ2 c2 t2 plus ρ3 c3 t3 divided by ρ1 c1 plus ρ2 c2 plus ρ3 c3 ठीक है Question number 10 is exactly a numerical value problem of this sum. हाँ, এটা numerical value problem. Try it जल्दी से. Okay. Question number 10 says that we have three equal masses of three different liquids. Their initial temperatures are 10 degrees Celsius. Initial temperature इसका initial temperature 25 डिग्री सेल्सियस है
40 degrees Celsius. Now they're saying when A and B are mixed, the temperature of mixture is 19 degrees Celsius. So A और B mix किया जा रहा है, N है इसका 25 है, right? So hotter body कौन है? B है. So for A and B, mCb into delta T is 25 minus 19. देखो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस है ना. For A and B mixed, final temperature is 90 degree Celsius. So इसका मतलब क्या है? mCb into 25 minus 19 is equal to mCa into 19 minus 10. Right? 19 minus 10. Alright? So यहाँ पर क्या हुआ? m और m cancel हो जाएगा. Cb into 25 minus 19 मतलब 6 is equal to 9 Ca. So if we cancel it, we'll have Ca by Cb. Ca by Cb equal to 2 by 3. Ca by Cb equal to 2 by 3. For B and C mixed, final temperature is 35 degrees Celsius. Therefore, m into Cc into 40 minus 35 is equal to m into Cb into 35 minus 25. Okay. So m cancels. Cc into 5 equal to Cb into 10. So Cb by Cc is equal to 5 by 10, which is 1 by 2. अच्छा, now see, we can write this as CBCC যেটা আছে, we can write this as 3 by 6, right? 3 by 6 लिखा जाए. So therefore, Ca is to Cb is to Cc is equal to 2 is to 3 is to 6. You agree with this? You know, combining ratios, you need to make the common ratio same. Over here Cb is 3, over here Cb was 1, so मैंने 3 से multiply कर दिया ताकि 3 by 6 हो जाए. So Ca is to Cb is to Cc will be equal to 2 is to 3 is to 6. Done? Yes, sir. Now they say, what are we mixing? Next, what are we mixing? तीन टेक action दे मेथड से. निश्चित की बोलছি? Now they are saying that A, B, C तीनों को अगर एक साथ मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, राइट? राइट बोला सर? So you know जब तीनों को मिक्स करेंगे वो पहले वाला सम जैसे किए थे वैसे करेंगे. मतलब when all three are mixed, all three are mixed, then you can say m into Ca into final temperature is not known to us, but सबका initial temperature मालूम है, ठीक है? So T minus 10 plus mCb into T minus 25 plus mCc into T minus 40 should be equal to 0. अब देखो Ca, Cb और Cc का रेशियो 2 3 6 दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसका वैल्यूज 2k, 3k और 6k ले सकते हैं, where k is a constant of proportion. So if you put that values back over here, तो ये m सबसे कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2k plus 3k T minus 25 plus 6k into T minus 40 is equal to 0. तो इसमें से हम लोग k कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या? 2t minus 20 plus 3t minus 75 plus 6t minus 240 equal to 0. So 2 plus 3 5 11 11t is equal to এটা কত হচ্ছে 75 315 335 ना
So T will be equal to 335 by 11 degree Celsius. So 335 by 11 जितना आएगा that will be the final temperature of the mixture. बोलेगा इसकी बोल रहा? आंसर अच्छा, question number 10 done. Well, 11 is also an important question. 11 take one कोई हमरा अच्छा এটা হয়ে যাবে জান পড় काम करिएगा बैंक चाहिएगा वो हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 11 में क्या हो रहा है 11 में बोला हुआ है कि एक आर्दर हुआ है मतलब एक मिट्टी का घड़ा हाँ मिट्टी का घड़ा उसमें पानी रखने से ठंडा क्यों होता है बिकॉज़ इट हैज गॉट वेरी स्मॉल पोर्स जिसमें से वाटर ओजेस आउट एंड इट इवेपोरेट्स सिर्फ वाटर ooze आउट करने से ठंडा नहीं होता है वो जब इवेपोरेट करता है तब वो हीट एनर्जी लेके जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन राइट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके जाता है इसलिए वो मिट्टी का जो वेसल है वो ठंडा हो जाता है सर सेम चीज नाउ द क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर यहां पर बोला है कि अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर पर सेकंड इवेपोरेट हो रहा है तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक आने में वाटर को कितना टाइम लगेगा हाउ मच टाइम विल वाटर टेक टू रीच फ्रॉम 30 टू 28 डिग्री सेल्सियस इस सेम यूज तो ह्यूमन बॉडी जो हम यूज हां एग्जैक्टली सो नाउ सी द let the time taken be t therefore mass of water evaporated देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर इज evaporated per second बोला हुआ है सो अगर t सेकंड्स टाइम लग रहा है तो mass of water evaporated in that time will be t into 1 gram t into 1 gram of mass मतलब t gram of mass evaporate हुआ है therefore heat absorbed by water evaporated is equal to how much कितना heat absorb करेगा heat absorbed by water evaporated कितना होगा बताओ जल्दी से अगर t ग्राम इवेपोरेट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो दिया हुआ है 540 किलो सो t into 540 ग्राम सॉरी ग्राम नहीं ये कैलोरी होगा t into 540 कैलोरी मतलब t ग्राम ऑफ मास ऑफ वाटर इवेपोरेट करने में इतना हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा ठीक है लेकिन किससे एब्सॉर्ब करेगा पूरा सामान से हाँ पूरा सामान से अब पूरा सामान देखो उसका वाटर इक्विवेलेंट 0.5 दिया हुआ है और वाटर है 9.5 kg सो टोटल मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.5 प्लस 0.5 मतलब 10 kg तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10,000 ग्राम लेकिन यही 10,000 ग्राम से t ग्राम्स इवेपोरेट कर गया है ना सो मास ऑफ वाटर दैट इज absorbing the heat sorry not absorbing that releasing the heat so heat released by 10,000 minus t gram of water is equal to उसका टेंपरेचर कितना चेंज हो रहा है 30 से 28 so 30 से 28 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस so mc delta t that is 10,000 minus t into c is 1 for water and delta t is 30 minus 28 ठीक है so all you need to do is heat loss equal to heat gain therefore 540 t is equal to 10,000 minus t into कितना होगा into 2 तो इससे सॉल्व करके t का जो वैल्यू आएगा that will be our answer that will be the amount of time required তাহলে কত আসছে 542t is equal to 20,000 so t equal to 20,000 divided by
542, right? So कितना seconds आ रहा है? 36.90036. 36.9 seconds, right? That is 37 seconds. 37 seconds. Yes. Yes. Plus